they are not absorbing, neither they are reflecting, they are just transmitting that energy. ये बॉडी क्या कर रही है, वो एब्जॉर्ब सब कुछ नहीं कर रही, जस्ट टेकिंग एंड लिविंग. ये कौन करेगा, तो ग्लास करता है. यू सी द ग्लास, हमारे होम में ग्लास लगे रहते हैं. वो ग्लास में क्या होता है, जब सूरज की रोशनी आती है तो ग्लास से पास होकर घर के अंदर आती है. तो ग्लास कैसे, ट्रांसपेरेंट मीडियम, दे आर नॉट एब्जॉर्बिंग, नॉट रिफ्लेक्टिंग, they are just transmitting that light energy, correct? So we can say that this is coefficient of transmission example. Now we already see this derivation. What derivation says, when you are supplying light radiant energy, either object absorb, reflect and transmit that energy. Now divide whole by radiant energy. So Q upon Q, QA upon Q, QR upon Q, QT upon Q बना. Now see, Q and Q cancel, क्या बचेगा, 1. Now Q upon Q किसका फॉर्मूला, QA upon Q स्मॉल a का फॉर्मूला, QR upon Q किसका फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल r, एंड Q2 upon Q किसका फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन. ना ये जो डेरिवेशन है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द डेरिवेशन सेज इन एनी बॉडी, if you have any type of body, either that body is absorb the light energy, either they reflect that light energy, either they are transmit their energy. either का मतलब क्या है, एक ही चीज करेगी वो, either they are absorbing, या तो रिफ्लेक्ट करेगी या तो ट्रांसमिट. कोई भी बॉडी तीनों प्रॉपर्टी नहीं दे सकती, अंडरस्टूड? किसी भी बॉडी में ये 3 प्रॉपर्टीज नहीं होती. लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी. सपोज वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बॉडी. Scientists say there are 3 types of body. One is called athermalous body, diathermalous body, and third is called perfectly black body. What is athermalous body? Suppose we have one object. When we are passing light energy, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, when we are passing light energy, this body absorbs that energy. After absorbing, suppose करो ये मेटल है, तुमने अवन तो देखा होगा ना, अवन में क्या होता है, सबसे पहले when we are supplying energy to oven, देयर जो रॉड होती है ना कॉपर की, वो एकदम रेड हो जाती है. तो क्या पता चल रहा है, फर्स्ट दे आर स्टार्टिंग एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी, एंड आफ्टर सम लिमिट व्हेन दे आर एब्जॉर्बिंग, जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करती है, उसी एनर्जी को दे आर रिफ्लेक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट, करेक्ट? So in this case, earth thermal body doing 2 things. They are absorbing as well as reflecting, but not transmitting. So that is why in that equation, what we have equation, we already have this. इसको मैंने क्या ले लिया, I am considering this part as a 0. So what we see in earth thermal body, they are doing 2 things, absorption and reflection, but both in one time, correct? Example water. आप अगर किसी वाटर को हीट कर देते हो तो वो रेड हो जाएगा, बराबर, अगर बहुत ज्यादा गर्म करेंगे. Wood is one of the iron, copper, lamp black. These all are the example of athermal body. Let's see the diathermal body. What happens in diathermal? When you are passing the light energy, they are not absorbing, neither they are reflecting, just they are transmitting that energy. One of the best example is glass, hydrogen, oxygen. See, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, जहाँ हम अर्थ में रहते हैं, जब सन की रेस हमारे अर्थ पे आती है तो क्या वो ऑक्सीजन की वजह से यहाँ रिफ्लेक्ट होती है क्या? नहीं, नॉर्मल पास होती है, हमारे अर्थ पे आ जाती है, करेक्ट? तो ये जो गैसेस है ये कैसी है, डायथर्मल सब्सटेंस के जैसा काम करती है. दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग, नाइदर दे आर अब्सॉर्बिंग दैट लाइट एनर्जी, दे आर जस्ट ट्रांसमिट दैट एनर्जी. ड्राई एयर, रॉक सॉल्ट आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायथर्मल सब्सटेंस. नेक्स्ट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी. परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एग्जांपल क्या करेगा, चारकोल. आई यू नो अबाउट चारकोल, यू कैन सी इन केमिस्ट्री लैब चारकोल कैविटी टेस्ट. जो किया नहीं है बट तुम लोगों ने ये चारकोल वहां देखा होगा, ब्लैक कलर का वुडन होता है, इसको वैक्यूम में करके ये क्रिएट किया जाता है चारकोल. तो चारकोल में क्या प्रॉपर्टी होती है, व्हेन यू आर सप्लाइंग दिस एनर्जी ऑफ दिस चारकोल, दे आर एब्जॉर्बिंग फुल एनर्जी, फुल लाइट एनर्जी. कोई भी ब्लैक चीज में आप लाइट मारोगे ना, वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, एंड साइंटिस्ट से द ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब 98% ऑफ लाइट. तो 100% लाइट में से कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इट एब्जॉर्ब 98%. बट साइंटिस्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएंट एनर्जी इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी. पर एक प्रॉपर्टी याद रखो, कोई बॉडी अगर जितना एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, कुछ वक्त के बाद वो उतना ही उसको एमिट भी करेगा. तो ब्लैक बॉडी में प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो 100% एब्जॉर्ब करता है, बट एक लिमिट के बाद वो 100% एमिट भी कर देगा उस एनर्जी. तो यहाँ पर जो स्मॉल ई है वो एमिशन को बता रहा है, अंडरस्टूड? केस बहुत रेयर है. तो ये अगर मैं ब्लैक होल की बात करूँ, तो ये जो स्टडी जब साइंटिस्ट लोगों ने ब्लैक होल का किया था, तो वहां पर भी उन लोगों को ये पता चला था कि ब्लैक होल जितना अमाउंट में लाइट एनर्जी का कर रहा है, उतनी अमाउंट में लाइट एनर्जी को वो रिलीज भी कर देता है बाकी, अंडरस्टूड?
You can see here, this black is attracted this light energy. Understood? तो देखो Sir, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, कुछ लाइट एनर्जी का अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है उसने. तो ये इसका फिनोमिना है, प्रॉपर्टी है ब्लैक होल का. वो लाइट एनर्जी कहाँ जाती है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता. यस स्टूडेंट, I hope you understand this part. Let's see one example. There is a scientist. What he's done, he takes one artificial black body because he is very curious about study about this black body. So उसने एक artificial black body बनाया. What he does, he take a two metal black, he take a C-shaped metal और उसका दो लेयर बनाया. One layer is inside and second layer is outside. इतना डबल लेयर क्यों रखा है मेटल का? So because of protection. दे वांट के जो लाइट पास हो रही है इनसाइड, वो लाइट आउटसाइड नहीं जानी चाहिए. इसने एक चैम्बर बना दिया, स्ट्रॉन्ग चैम्बर, आइसोलेटेड चैम्बर. नाउ फ्रॉम इनसाइड they are coating with charcoal, coating with lamp black, sorry, lamp black, not charcoal. And the middle part, in mid part, they are coating with triangular और conical projection. Conical projection मतलब मिड में उसने ट्रायंगल की तरह उसने कोटिंग किया. They are coating like a triangular part. Now what happened when we are supplying light energy from this side, horizontal part, they first strike to this conical part. So scientists say 98% light is absorbed this conical part. And what about the remaining? So we know the property of light. They are start striking through the wall. So they are reflecting each place. After reflection, that 3% remaining light is absorbed this remaining wall coating. Understood? So this is the artificial experiment which is done by Fairy, and this is successfully experiment. So now यहाँ से लोगों को clear हो गया. So the black body is having a power. They can absorb full light radiation energy. So on the basis of this, we will further study black body spectrum. What is black body spectrum? Graphically, we will understand black bodies, how they are behaving. So on the y-axis, we are using the intensity of energy. On the x-axis, we are represented by wavelength. Now, graphs represent that when we are going down to up, their energy is increases. When we are going down, the energy is decreases. Okay. The wavelength, what wavelength represents? When we are going to left hand side, wavelength decreases. And when we are going right hand direction, the wavelength is increased. I hope you understand y and x. Now we will see. When suppose you have body and you are applying how much energy? You are giving 1000 Kelvin energy. What happens? When you are giving 1000 amount of energy, their energy, see the graph represents their energy is increases and their wavelength is also increases. But at particular peak point, their energy is maximum. This peak point, this is called peak value, where the energy is maximum. After you are increasing the wavelength, the energy is not increased. The wavelength is increases, but the energy is start on decreasing. What happened this phenomena when you are giving temperature how much? 1000 Kelvin. Now I'm increasing my temperature. Now I'm giving 1200 Kelvin. What happened? The substance wavelength as well as energy is increases, but at a peak point, wavelength is increases, but the energy goes on decreasing. I will understand what graph is saying. Now each place same thing is happened. When you increase the temperature, energy is increases, wavelength is increases, but at certain point the energy goes on decreases. Those certain points is called peak value, where the energy behaves opposite to wavelength. Clear? Now we will see the different graph for understanding this part. In this graph, what graph says? When you increase the wavelength, temperature is decreased. This T represents the temperature. But when you decrease the wavelength, temperature is start on increasing. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो wavelength होती है और जो temperature होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं. If you increase the temperature, wavelength decreases, and when you increase the wavelength, temperature decreases. See here peak point. This peak point is going to the left hand side. If they are going to the left hand side, what this peak point says? If you increase the energy, the wavelength goes on decreasing. Correct ना? Left side का मैंने क्या बताया था? अगर left side कुछ भी जाता है peak point, it represents the wavelength is decreases. So energy increases, temperature increases, wavelength decreases. Clear होगा? I hope you understand how this thing is work. Now this scientist win displacement law.
This wind scientist says about the same thing what we are studying in upward. He says the wavelength and temperature are doing in opposite. When you increase the wavelength, the temperature goes on decreasing. So how we represent this part in mathematically? Similarly, we can say that the wavelength is inversely proportional to temperature. Now we remove this proportionality sign. So we are putting small b. This small b represents the wind constant. Now this wind scientists calculate their value and what they are getting 2.898 into 10 to the power minus 3 meter Kelvin. What exactly the wind saying? The law states that the wavelength for which emissive power of black body is maximum. Okay? Wavelength, that means wave lambda is maximum is inversely proportional to the temperature of the black body. जो मैंने बोला वही चीज में यहाँ लिखा है. Anyone having any doubt here? Students, Kulsum, guys, Tabassum, Musab. Clear this part? We go further. Users. Where we are using this phenomena, when we are checking high temperature of distant stars and moon का अगर study करना है, we have to determine. So we are using this wind displacement phenomena. इधर पे ज़्यादा detail नहीं दी है. SI unit meter Kelvin and dimension is M0 L1 K plus. Now next part is Mayer relation. For understanding this part, we first understand specific heat. What do you mean by specific heat? You already know about this part in chemistry. Tell me. And we already learned this part as well as physics. क्या होता है specific heat? Anyone? Anyone who know about this part? Yes. Yes, sir. What do you mean by specific heat? जितना अपने को जरूरत है ना स्पेसिफिक उतना ही अमाउंट में. हाँ ना. Specific heat से scientist says किसी substance के now understand this definition. किसी substance के एक यूनिट सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के तरीके को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. आई वी अंडरस्टैंड. एनी सब्सटेंस any 1 unit of substance increase or raise the temperature in 1 degree Celsius, the method is called specific. Understood? एक यूनिट सब्सटेंस बहुत छोटा होता है, कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री, यानी स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? हम लोग एक स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहे हैं. करेक्ट. स्पेसिफिक बोलूंगा फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग द रीडिंग, सो आई एम सेइंग मेरे को एक्यूरेट रीडिंग चाहिए. एक्यूरेट इज लिंक्ड बाय स्पेसिफिक. द स्पेसिफिक थिंग सेम थिंग. स्पेसिफिक मतलब एकदम फिक्स परफेक्ट अमाउंट. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट क्या बोल रहा है कि एक यूनिट सब्सटेंस का जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हीट हुआ वो छोटा छोटा स्टडी कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक. अंडरस्टूड? I will understand this part. We already done this in 11th class. Now we will understand here Mayer relation. What Mayer says? The Mayer says with the help of this scientist, we see the relationship between two specific heat. इसमें क्या बोला कि हम एक साथ दो specific heat की study कर सकते हैं. And either they are saying कि without एक specific heat कहीं पर भी happen नहीं होता. In one case, two specific heat is happen simultaneously. So we will see the example for understanding this part. Suppose मेरे पास एक piston है. You know about bike, car, सभी में piston engine होता है. So मैंने यहाँ पर एक piston बनाया. This is container and this is piston machine where we are pushing up and down. ये up and down होगी this machine. And inside there is a gas container is there. Okay. Now in first case we are applying CV. Now the question, what do you mean by CV? So CV is nothing but coefficient of specific heat at constant volume. Specific heat at constant volume is represented by CV. Okay. Now in this case, what we are doing, we are changing the pressure. For changing the pressure, we are applying external pressure. Suppose for मैंने हाथ से pressure apply किया, and I am pushing this piston downward direction. Suppose I am pushing this piston and cover small distance. If I am covering small distance, तो common sense से small volume change आएगा इन दोनों piston में. अंदर का जो हिस्सा है वो how we are representing this part by volume. So if I am covering small distance, small volume is happened. Correct?
So in this case, we are changing the pressure, but the volume is constant because scientists क्या बोलते हैं? If we are changing the volume is very small or distance is very small, suppose it is 0.15, we are considered as this as zero. Correct? So here is volume is very small. So can we say that the small volume, that is dV, is equal to zero? Now we know the work done formula. We already learned in thermodynamics chapter. You already learned in thermodynamics class 12 chapter chemistry. What is the work done formula? dW is equal to P Now here dV is zero. So if dV is zero, this whole part becomes zero. So what we are getting, my work done is become zero. Clear is this part? If you understand this part, now we understand this derivation. Consider, consider we have an ideal gas enclosed in a cylinder. Make it small, more small. Consider a mole of an ideal gas enclosed in a cylinder. Suppose this is a cylinder and here inside ideal gas is there. Okay? Frictionless airtight piston. Let P is pressure, V is volume, and T is the temperature of that gas piston. Let dq is the amount of heat supply. Amount of heat supply, suppose मैंने नीचे से एक बर्नर लगा दिया और उस बर्नर से I am passing the heat energy to this piston container. Okay, so that supply heat energy I am represented by dq. When I am supplying heat energy, of course उस गैस का temperature increase होगा. Common sense है. That temperature increase I am represented by dt. At constant volume. Why I am representing constant volume? So already we see कि यहाँ पर जो distance small cover हो रहा है तो volume कैसा है? Zero है. Zero volume represent at constant volume. On the basis of this, can we represent equation like this? dq1 is equal to d plus dw. You understand how we are getting this equation? What equation says? When you are supplying the heat energy, the gas energy is increases and that gas is starting the work. क्या work किया? उसने जो piston को small up and down किया ना. But the problem is here the gas does not done any work because what we are getting dw value अभी मैंने बताया था dw what we are getting 0. Correct? So can we say that when we are supplying heat energy to a gas container, the internal energy is represented by d is increases. So can we say that dq1 is equal to d? The student, can you understand this part? Anyone having any doubt? Okay, we shall go further now. Now here, what is internal energy? Now internal energy is depend upon the volume of the gas and how much temperature you are increasing that gas. Correct? So here I am representing dE by CV dt. I already said that. What is CV here? Here CV is specific heat at constant volume. What is CV here? Specific heat at constant volume. Because यहाँ पर कोई change नहीं हुआ ना, volume constant था. So can we represent this dE by CV dt? Okay, if dq is cv dt, we already know dq1 and d is same. So can we replace this dq by d? What we are getting d is cv d. Understood this part? This is our first equation. Tabassum, Musaf, anyone having any doubt? Okay. No, sir. In next example, we see one more container here. In this container, what happened? In this case, we are changing something. In this case, we are taking pressure is constant. मैं एक weight रख देता हूँ piston में ताकि इसका pressure constant हो जाए. And what I'm doing here, I'm giving container heat. इतना ज़्यादा heat दूंगा ना, इसकी गैस का collision बढ़ जाएगा और उसके चक्कर में क्या होगा? ये सारे गैस ना piston पे pressure लगाना शुरू करेंगे. अब pressure लगाने पे क्या होगा? ये जो piston है वो up होगा, correct? Up होने पर क्या होगा? वो distance change करेगा. Suppose their initial volume is V1. जब उसने पुश किया तो उसका दूसरा फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया V2. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वॉल्यूम. दैट मींस यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ है एंड द प्रेशर इज कांस्टेंट बिकॉज मैंने वेट रख दिया. वेट पुट करने पर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया. मैं अपना प्रेशर चेंज नहीं कर रहा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हेन द वॉल्यूम इज चेंज बट द प्रेशर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. इसको क्या बोलते हैं? एंड रिप्रेजेंट बाय सीपी. तो यहाँ इस केस में हम लोगों ने क्या किया? सीपी किया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किया. तो वो कांस्टेंट प्रेशर है बट द वॉल्यूम इज चेंज. नाउ इन दिस केस वी ऑलरेडी नो इन केमिस्ट्री कि प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट. प्रेशर कभी चेंज नहीं होता.
और प्रेशर का वी हैव वन स्पेसिफिक वैल्यू, so we cannot take P as 0. So here what we are getting dW PdV because यहाँ पे work done 0 नहीं है. There are some work done happen in the gas, so that is why we are represent dW by PdV. Let's see the equation. Again, we are supplying heat energy. This is second case, so that is why we are represent by dQ2. When we are supplying heat energy, what happens? The internal energy of the gas is increases, and that internal energy of the gas doing some work, they are changing the piston position. Correct? Now we know that dW is nothing but PdV. Second, d का वैल्यू जस्ट वी आर टेकन, क्या मिला था d का वैल्यू इन आप इक्वेशन cv dt. So we are putting इस d की जगह पे मैं क्या ले लूंगा, what I am taking here cv dt. This part is as it is. And what about this dq2? What is dq2? यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट किस पे सप्लाई कर रहे हैं, एक पिस्टन पे जिसका प्रेशर क्या था, कांस्टेंट. इफ देयर प्रेशर इज कांस्टेंट, कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा ये, specific heat at constant pressure dt. So we are represent this dq2 by cp dt. Now in this case we will see in this part and this part dt is common, so take this dt common. What is the remaining uncommon part, cp and cv. Okay, what we do next, we know about the ideal gas formula. What is pv is equal to rt. पर यहाँ पर जो वॉल्यूम चेंज है वो स्मॉल है, so v I am represent by d and t I am represent by small t. मैंने सिर्फ d ऐड किया. See here, PdV का वैल्यू मेरे को क्या मिल रहा है, RdT. तो यहाँ पर मैं PdV की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, RdV. See, what I am putting here, RdT. Now this dt and this dt is cancelled. What we are getting, Cp minus Cv is equal to R. Now next, what about this joule? ये joule कहाँ से आता है, ये joule actually unit होता है. Understood? Next. Now Cp minus Cv is equal to R. यहाँ तक clear है. Now can be replaced by this Cp by m0 sp minus m0 sp is equal to R. तो ये m0 कहाँ से आया, तो this m0 represent the molar mass. देखो मैंने राइट में लिखा है molar mass of the gas. करेक्ट ना, कितना कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज हुआ वो उस पर भी डिपेंड करता है ना कि उस कंटेनर के अंदर कितनी गैस भरी हुई थी, और गैस की क्वांटिटी का पता हम इसके मोलर मास से लगाते हैं. तो मैंने क्या किया, उस फॉर्मूले में m0 ऐड किया. बट व्हेन यू आर एडिंग m0 you have to show this formula by s. So what do you mean by sp? The sp represent the principal specific heat at constant pressure. वो सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रही है but with molar mass. And cv I am replacing by m0 sp, but sp represent principal specific heat at constant volume and m0 represent the molar mass. Now m0 is common, so take m0 common. What we get inside, sv minus sv is equal to r. Take this m0 right hand direction, so we are getting the relationship between two specific heat, which is nothing but r m0 g. I can understand this part. Anyone have any doubt? मेयर रिलेशनशिप में सिर्फ ये रिलेशनशिप बताया था और कुछ नहीं. We go further. Now इसके बेस पर डेरिवेशन है, we will see the derivation because मैं small derivation से, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के लिए मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, स्मॉल सा असाइनमेंट which is there in your textbook. This degree of freedom is not there in your board exam, so we are not doing this part. Law of equal partition is also not there, so we directly come to the specific heat of gas. So we know about specific heat of gas. अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो that is called specific heat at constant pressure, which is represented by Cp, and constant volume होगा तो we are represented by Cv. Understood? So we know about the symbol. तो यहाँ पर देखो स्मॉल दो डेरिवेशन, वन डेरिवेशन इज मोनोएटॉमिक बेसिस पे and second derivation is based on diatomic. Okay, and last derivation is based on polyatomic. What do you mean by this monoatomic, diatomic? हम लोग को सिर्फ स्पेसिफिक हीट निकालना है. मोनोएटॉमिक मतलब किसी गैस के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट, एक ही टाइप के या एक ही एटम प्रेजेंट, and we are studying the one atom of gas, that is called monoatomic gas. Mono means one atomic gas की स्पेसिफिक हीट की स्टडी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. So how to calculate this part? So we know about average kinetic energy per unit molecule at temperature is 3/2 kBT. Now how we are getting this part? So we done in previous derivation. Remember जो मैंने assignment दिया था आपको, वहां से ये वैल्यू मिली है. Okay,
फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल में क्या करना है, जस्ट ऐड दिस एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद क्या करना है, दोनों को टोटल करना है और जो भी वैल्यू है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। Suppose if you are not understanding this derivation, I will explain this part. So this derivation, three derivation is there, small derivation in your textbook. That is your assignment. I show you this derivation. Textbook में मैं show कर देता हूँ. So this is next. We are going line by line. हाँ, we are done this derivation. देखो ये वाला मैंने दिया था तुम लोग को टॉपिक असाइनमेंट, ये आया है टेम्परेचर काइनेटिक के लिए। वी आर डन दिस पार्ट। लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ये कैंसिल कर दिया है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट देयर। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज आल्सो नॉट देयर। तो वेरी इजी। स्पेसिफिक हीट मैंने एक्सप्लेन किया तुम लोग को, एंड दिस मेयर रिलेशन मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो वी आर डन दिस पार्ट। फिर उस मेयर रिलेशन के बीच बेस पर स्मॉल स्मॉल डेरिवेशन है, 1 A D एंड C। ई में कुछ ज्यादा है ही नहीं डेरिवेशन जैसा, स्मॉल डेरिवेशन से। तो ये आपको, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको करना है, खुद से ट्राई करना है, सिंपल है। और बोर्ड एग्जाम इतना नहीं पूछता है ये पार्ट, दैट इज व्हाई वी आर नॉट डूइंग मोर अबाउट दिस थिंग। नाउ अगेन कम टू आप किरचॉफ लॉ। फॉर स्टार्टिंग दिस किरचॉफ लॉ, व्हाट किरचॉफ लॉ सेज कि कोई बॉडी, मैंने देखो बताया था ब्लैक होल का एग्जांपल, कोई बॉडी जितना ज्यादा कोई लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी उतना ही ज्यादा उसको एमिट करेगी एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, एंड दैट इज सेज बाय दिस साइंटिस्ट नेम इज किरचॉफ। व्हाट किरचॉफ सेज, द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एमिशन। हैव यू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी इज directly proportional to or equal to the coefficient of emission of that body at given temperature. Now we know about the formula of emission. How to find out the coefficient of emission? Very easy. The coefficient of emission is depend upon the ratio of emission power of black body upon emission power of any ordinary body. Common sense है। हमको कोई भी एमिशन की स्टडी करना है तो हम टोटल से करते हैं। क्लास में कैसे मार्क्स निकालते हैं कि मुझे 300 में से कितने मार्क्स आए, करेक्ट? तो जारी बात है, ब्लैक बॉडी का एमिशन और अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, तो हम इसको डाउनवर्ड रखेंगे और ऊपर जो ई है वो एनी ऑर्डिनरी बॉडी का ई है वो, ओके, जो कि फिक्स नहीं होता। अंडरस्टूड दिस पार्ट स्टूडेंट? So can we replace this small e by e upon eb? Yes. Now replace this ep left hand side and take this a here. So we getting again relation MSC power black body and coefficient of absorption. Again we are getting one more definition based on this derivation. We will see later. फिर उसका theoretical concept downward देखिएगा। यहाँ तक कोई doubt आया? Anyone having any doubt student regarding this concept? मतलब fulsome size, total 14 students is present. Okay. So we are stopping here. We have less than 1 minute. I have already given one assignment, and please complete that assignment, students. Okay. Can you hear me, students? Hello.